हेलो, मैं योगाचार्य राकेश बलोनी आपका अपने योग स्तंभ चैनल में स्वागत करता हूं। और आज एक और टॉपिक के साथ मैं आपके सामने हाजिर हूं। जो टॉपिक है हमारा वो है बैक से रिलेटेड, बैक पेन के लिए। कि आज के टाइम में बहुत सारे लोगों को बैक की समस्या है, और बहुत समस्या इसलिए भी है क्योंकि हम लोग अपनी बैक को स्ट्रेट नहीं रखते। हम कुछ भी वर्क करते हैं तो हम उसमें क्या है कि अपनी बैक को मोड़ देते हैं, जैसे हंच आ जाता है बैक में, ठीक है। तो उससे क्या होता है, बैक की प्रॉब्लम होती है, बैक की समस्या होने लग जाती है। या हम जब भी घर में काम करते हैं तो हम क्या कहते हैं, बहुत ज्यादा झुक के काम करते हैं, फॉरवर्ड बेंड कर देते हैं, तो इससे क्या होता है, बैक में समस्या होती है, ठीक है। तो उसी के लिए आज मैं आपको बहुत ही अच्छे और बहुत ही सरल आसन बताने वाला हूँ। अगर आप डेली उन आसनों को करते हैं तो आपको कभी भी बैक की समस्या, बैक पेन की समस्या नहीं होगी, ठीक है। सबसे पहले तो आपको क्या करना है, अपनी बैक को स्ट्रेट रखना है। आप कुछ भी वर्क कर रहे हैं तो अपनी बैक को जितना हो सकता है उतनी स्ट्रेट रखने की कोशिश कीजिए। अगर आप ड्राइविंग कर रहे हैं तो उसमें बैक को स्ट्रेट रखिए, ठीक है। अगर आप फोन चला रहे हैं या आप सो रहे हैं तो आपको करवट लेके, बाएं या दाएं करवट लेके सोना चाहिए, ठीक है। और आपको कभी भी पिल्लो का यूज नहीं करना है, ओके। चलिए शुरू करते हैं और मैं आपको बताता हूँ कौन कौन से वो पोस्चर हैं जिससे आप अपनी बैक की जो समस्या है, दर्द है, उसे दूर कर सकते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, इस तरीके से वज्रासन में बैठ जाना है, ओके। सिट इन वज्रासन एंड बैक बैक स्ट्रेट एंड स्लोली इनहेल, लिफ्ट योर आर्म्स अप एंड इंटरलॉक योर फिंगर एंड स्ट्रेच योर आर्म्स अप स्ट्रेट, स्ट्रेच योर बैक एंड लुक अप। 1 2 Inhale, lift your arms up, interlock your finger and look up. 1 2 and 3 and exhale. Again, last time, inhale, interlock your finger, stretch your arms up, stretch your back and look up. Then exhale, relax. Then next, twisting. आपको अपने knees को open कर देना है, back को straight रखना है, okay? And then start twist. आपको क्या ना, अपने राइट लेफ्ट हैंड से राइट नी को कैच करना है और जो आपका राइट हैंड है उसको बैक पीछे लेके जाना है और इस तरीके से आपको धीरे से ट्विस्ट करना है। राइट साइड ट्विस्ट करते हुए लुक बैक, पीछे लेके 1 2 चेंज, 3 चेंज, 4 change and relax, okay. Then twisting again, vinyasa, okay, cat pose। आपको धीरे से इस तरीके से अपने दोनों नीज को बेंड करते हुए टोस को फ्लैट कर देना है और आपके जो दोनों हैंड है वो इस तरीके से स्ट्रेट रहेंगे और पाम्स मैट को टच करते हुए दोनों एल्बोज स्ट्रेट, ओके। देन स्टार्ट कैट पोज। फर्स्टली एक्सेल, पूरा श्वास छोड़ते आपको क्या करना है, जो आपका थोरेसिक पार्ट है उसको लिफ्ट करना है पूरा आप, ओके। देन इनहेल, slowly both hands straight and आपके जो लोअर बैक है उसको आपको क्या करना है, प्रेस करना है। एक्सेल, इनहेल श्वास लेते हुए नीचे की तरफ, ओके। एंड धीरे से आपको ऊपर देखना है, लुक अप, एक्सेल, लिफ्ट योर thoracic up, look forward, inhale and look up, exhale, arch your back, lift your thoracic up, look forward, inhale, look up, both hands straight, exhale, inhale and hold 1 2 3 and 4 and exhale, hold 5 count, 1 2 and 2, okay. Then next step, close your toes and open your knees, more open your knees, then hip down and slowly bend forward, okay. Then exhale forward and hold 5 count, 1 child pose, 2 3 4 and 5, okay. The next cobra pose, आपको इस तरीके से धीरे से अपनी मैट में लेट जाने, जो दोनों हाथ हैं हथेलियों को इस तरीके से अपनी चेस्ट के बगल में रख देना है। अब धीरे से दोनों पैर को मिलाते हैं, feet together, both legs straight। अब इनहेल, धीरे से श्वास लेते हैं, इनहेल, lift your chest up, both hands straight and look up, exhale slowly and bend, wait, so inhale, lift your chest up, look up, न्यू करें मत नहीं,
exhale down. So you inhale, lift your chest up, both hands straight and look up. Count 1, 2, 3, 4 and 5. Okay? मैंने 5 काउंट करके बताया, आपको क्या करना है 10 काउंट तक होल्डिंग करनी है. Okay? And then exhale down. अब इसका नेक्स्ट पोस्चर है मकरासन. ओके, मकरासन. इसमें आपको क्या करना है, अपने दोनों एल्बोस को बेंड करना है. इस तरीके से एल्बोस को बेंड करते हुए क्लोज करना है और आपको अपनी चिन को कैच करना है. इस तरीके से चिन को कैच करते हुए आपको जो आपके पैर के पोजीशन है उसको चेंज कर देना है. जो आपके टोज है वो आउटसाइड हो गया, हील्स इनसाइड. ओके, एंड देन अपनी जो एल्बोस उसको थोड़ा सा वॉक करना है फ्रंट की तरफ एंड होल्ड, लुक अप एंड रिलैक्स. इनहेल एक्सहेल, नॉर्मल ब्रीथिंग. 10 काउंट होल्ड करना है. 1, 2, 3, 4 and 5. Relax. Okay? That. And slowly come out. उसके बाद आपको क्या करना है, अपने जो धीरे से दोनों घुटने उनको बैंड कर देना इस तरीके से. ठीक है? पोस्चर का नाम है ब्रिज पोज, सेतुबंध आसन, जिसे हम ब्रिज पोज बोलते हैं. ठीक है? आपको धीरे से दोनों नीज को बैंड करते हुए इस तरीके से कैच करना है. अपने जो एंकल है इनको पकड़ना है इस तरीके से और उसके बाद धीरे से लंबा गहरा श्वास लेते हुए अपने हिप को लिफ्ट कर देना. इनहेल अप, एक्सहेल डाउन. इनहेल अप, एक्सहेल डाउन. इनहेल अप and hold. 5 count. 1, 2, 3, 4 and 5 and exhale. Relax and slowly both legs straight and shake your leg. 1, 2 and 3. अब लास्ट पोस्चर है जिसमें आपको ट्विस्ट करना है. ठीक है, धीरे से. तो आपको इसके लिए क्या करना है, अपना जो राइट लेग है उसको बैंड करना है, लिफ्ट करके बैंड करना है और अपने जो लेफ्ट हैंड है उससे आपको राइट जो नी है उसको कैच करना है और लेफ्ट साइड आपको करना है, राइट लेग को लेके जाना है इस तरीके से. ओके, देन एंड लुक राइट साइड. ओके, ट्विस्ट योर स्पाइन. मरकट आसना and slowly exhale. Inhale, bend your left knee. Okay, right and catch your left knee and left leg go slowly right side and look left side. Okay, slowly left leg is straight. Again, one more time. Bend your right leg, catch your right knee and slowly go left side and look right side. Slowly exhale. Last change. Lift your left leg, bend your left leg, catch your knee and slowly go right side and look left side. आपको मैंने नी के अपोजिट साइड में देखना है. ठीक है, ट्विस्ट करते हुए पूरी स्पाइन को and slowly and relax. तो आपने देखे कौन कौन से पोस्चर हैं जो हमने आपको करके दिखाए हैं और आपको मैं बता दूं ये बहुत ही लाभदायक आसन है. ठीक है, अगर आप करेंगे तो आपको बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा. बस आपको रोजाना करना पड़ेगा जिससे आपके बैक में कभी भी पेन नहीं होगा. ठीक है, आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए एंड शेयर कीजिए. चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए ऐसी आने वाली बहुत सारी वीडियोस के लिए. हरिओम.